Hallelujah. हालेलुया. You can all kindly be seated, please. कृपा करके सारे लोग बैठ जाएं. कृपा करून सर्व बसून घ्या. We greet you all in the sweet and the loving name of our Lord and Savior Jesus Christ on the first day of this blessed convention. इस धन्य सम्मेलन के पहले दिन में प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम आपका स्वागत करते हैं. या संमेलनाच्या पहिल्या दिवशी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावात आम्ही तुम्हा सर्वांचे आम्ही अभिनंदन करीतो. That the Lord may speak to us this evening from the throne of His grace. Let's all bow our heads in prayer for 1 minute. 1 मिनट के लिए आओ. आज इस शाम के वक्त में परमेश्वर से बातें करने के लिए, प्रार्थना के लिए सिरों को झुकाएं. आणि या संध्याकाळच्या वेळेस परमेश्वर आपल्या सोबत बोलण्यासाठी या आपण 1 मिनिट आपले डोके आपण खाली टाकूया. Praise the Lord. Hallelujah. We thank and praise the Lord. And Lord, speak to us, Lord. Through thy grace, let thy name be glorified, Lord. Send thy word and speak to us, Lord. Thank you, Lord, for hearing us. In Jesus' precious name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us turn our Bibles to the book of Acts, chapter 3 and verse 26. प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 26 वचन की ओर आइए हमारे धर्मशास्त्र को हम खोलेंगे. प्रेषितांची कृत्ये 3 अध्याय याचे 26व्या वचनाकडे आपले शास्त्र आपण वळूया. परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे. देवाने आपल्याला सेवकाला उठून प्रथम तुम्हाकडे पाठविले यासाठी की त्याने तुम्हा प्रत्येकाला तुमच्या दुष्कृत्यांपासून वळून जाण्याचा आशीर्वाद देत जावा. And to you first God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you in turning away every one of you from his iniquities. Here the word of God says, unto you first, God having raised up his son Jesus, sent him to bless you and to turn you from all your iniquities. जो सबसे पहला वचन हमने यहाँ पर पढ़ करके देखा वो इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने अपने दास यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा ताकि तुम में से हर एक लोग बुराई से फिर करके आशीषों को पा सको. आणि आपण या ठिकाणी प्रथम पाहतो त्याचा दास प्रभू येशू ख्रिस्ताला परमेश्वराने या जगामध्ये यासाठी पाठविले की सर्व दुष्कृत्यापासून आपण फिरावे. Tonight our Lord and Savior Jesus Christ has come in our midst to bless us. आज की शाम के वक्त में हमारा प्रभु यीशु मसीह में आशीष देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है. आज संध्याकाळच्या वेळेमध्ये आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला आशीर्वाद देण्यासाठी आपल्यामध्ये तो आहे. Not only to bless us, He is going to turn us away from all our iniquities and sins. ना केवल वो हमें आशीष देने के लिए किंतु उसके साथ ही साथ हमारे सारे बुराइयों से, हमारे सारे जीवन की कमी घटियों से हमें फेर देने के लिए वो हमारे बीच में उपस्थित है. आणि फक्त आपल्याला आशीर्वादित करण्यासाठी केवळ नव्हे तर आपल्या सर्व दुष्कृत्यांपासून, सर्व कमी उण्यापासून तो बदलण्यासाठी तो आपल्यामध्ये आहे. The word of God says in 1 Thessalonians 5:9 that we are not appointed for wrath but to obtain salvation by our Lord and Savior Jesus Christ. पहला थिस्सलुनी 5वें अध्याय को पढ़ने के समय में हमारा परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया कि तो उद्धार पाने के लिए हमें नियुक्त किया है. आणि पहिले थिस्सलुनीकरास पत्र 5 अध्यायाच्या 9व्या वचनामध्ये आपण पाहतो आपला प्रभू येशू ख्रिस्त जे आहे आपल्याला जे आहे क्रोधासाठी नाही तर त्याच्या उद्धारासाठी, तारणासाठी तो आपल्याला ठेवलेला आहे. The purpose for Jesus to come into this world is to deliver us from all our sins. प्रभु यीशु मसीह संसार में आने का उद्देश्य यह है कि हमें हमारे सारे पापों से हमें छुड़ा दे. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे या जगामध्ये येण्याचे उद्देश हेच आहे की सर्व पापापासून तो आपल्याला सोडवावे. The birth of our Lord and Savior Jesus Christ was already foretold to his parents, that is Joseph and Mary, that his name will be called Jesus and he will save his people from their sins. प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले ही उसके माता पिता को यह सूचित किया गया था कि प्रभु यीशु का नाम यीशु तुम लोग रखना और वो सारे मानव जाति का उद्धार करता होकर के दिखाई देगा. आणि आपण शास्त्रामध्ये पाहतो येशूच्या आई वडिलांना जे आहे आधीच सूचित करण्यात आले होते की जो बाळक जन्म घेणार आहे त्याचे नाव तुम्ही येशू ठेवा, तो पूर्ण जगाचा तारणारा होईल. So he is the only savior of the whole world. वही सारे मानव जाति के लिए, सारे संसार के लिए उद्धार करता है. आणि तो या पूर्ण जगासाठी, या संसारासाठी तो तारणारा आहे. Amen. He is present in our midst tonight also
to heal you and to save you from all your sins. आपके पाप से उद्धार करने के लिए, आपकी बीमारी से आपको चंगाई करने के लिए आज भी शाम के वक्त में वो उपस्थित है. आणि तुमच्या सर्व पापापासून सोडवण्यासाठी, तुमच्या सर्व आजारांपासून सोडवण्यासाठी आज संध्याकाळच्या वेळेस आपला प्रभू आपल्यामध्ये मध्यस्थ आहे. The Hebrew word meaning for save is sozo. इब्रानी शब्द में उद्धार के शब्द को सोर्जो करके कहा जाता है. आणि इब्री शब्दामध्ये उद्धार याचे अर्थ शोजो असे म्हटले जाते. In Matthew 1:21 we read that, and he will be called Jesus because he will save his people from their sins. मत्ती लिखित सुसमाचार के अध्याय 1 के 21 वचन में उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो पापों से लोगों का उद्धार करेगा. आणि जे आहे आपण मत्ती शुभ वर्तमान पहिल्या अध्यायाच्या 21व्या वचनामध्ये पाहतो, तिला पुत्र होईल व त्याचे नाव तू येशू असे ठेव, कारण तोच आपल्या प्रजेच्या त्याच्या पापापासून तारील. So sozo means to save as well as to heal. सोजो शब्द का अर्थ जो मूल भाषा में है, अगर हम उसको भाषांतर करते हैं तो अर्थ होता है उद्धार करना, बचाना, साथ ही साथ चंगाई भी करना. आणि सोजो या मूळ शब्दाचे अर्थ जर आपण समजून घेतले तर तारण करणे आणि आरोग्य देणे आणि जे आहे तारण करणे असे त्याचे अर्थ आहे. He is not only our healer, not only our savior, he is also a healer as well. ना केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो हमारा चंगाई करने वाला भी है. आपला प्रभू येशू ख्रिस्त केवळ तारणारा नव्हे तर तो आपल्याला आरोग्य देणारा परमेश्वरी आहे. Therefore tonight when we open our hearts to the Lord Jesus Christ, he will give you salvation. He will give you the peace of mind that the world cannot give. और अगर आज की शाम के वक्त में हमारे दिल खोल के यीशु को जगह देने से हमारे यीशु मसीह हमें उद्धार देगा, संसार ना दे पाए ऐसी एक असीम शांति वो हमें प्रदान करेगा. आणि आज आपले हृदय आपण देवाकडे उघडले असता प्रभू येशू ख्रिस्त हे जग न देऊ शकणारी शांती तो आपल्याला देईल. Tonight I want to expound the truth of why Jesus Christ was manifested in this present evil world. इस वर्तमान के बुरे संसार में यीशु मसीह क्यों प्रकट हुआ, क्यों आया, इस विषय को मैं आज आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूं. आणि या वर्तमान युगामध्ये आपला प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये का आला याविषयी मी आज तुमच्या समोर ठेवू इच्छितो. According to 1 John 3rd chapter verse 5, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 5 वचन के अनुसार, आणि पहिले योनाचे पुस्तक 3 अध्यायाचे 5वें वचनानुसार, please read that. 1 John 3:5. पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 5 को पढ़ेंगे. योहानाचे पहिले पत्र 3 अध्याय याचे 5वें वचन वाचूया. और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं. तुम्हाला माहित आहे की पापे हरण करण्यासाठी तो प्रगट झाला, त्याच्या ठाई पाप नाही. And we know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Here we read, and you know that he was manifested to take away all our sins. यहाँ पर वचन में देखने पाते हैं वो इसलिए प्रकट हुआ कि वो हमारे पापों को हर ले जाए या हमारे पापों को लेके चले जाए. आणि आपण या ठिकाणी वचनामध्ये पाहतो तो यासाठी प्रकट झाला की आपले पापे तो हरण करून घेऊन जावे. He is a great savior who can take away all our sins. Absolutely. वो एक महान उद्धार करता है जो संपूर्ण रीति से हमारे पापों को हर ले जाता है. आणि तो एक महान तारणारा परमेश्वर आहे जो आपले सर्व पापे हरण करून तो घेऊन जातो. We are all the living witnesses for this divine truth. और इस ईश्वरी सच्चाई के हम गवाह हैं. आणि या सत्य ईश्वरी गोष्टीचे आपण साक्ष आहोत. We were also immersed in the sins of this world. इस संसार के पाप में एक समय में हम भी डूबे हुए थे. आणि या संसाराच्या पापामध्ये एकानेक वेळेस आपण देखील बुडालेलो होतो. When we opened our heart to the Lord and Savior Jesus Christ, जब God removed all our sins. And God forgave us from all our sins. जब हमने हमारे दिल प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए खोल दिया, उस समय में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर के हमारे सारे पापों को हमारे जीवन से मिटा डाला, निकाल दिया. आणि जेव्हा आपले जीवन आपले हृदय आपण आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला दिले, तेव्हा आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनात येऊन आपले सर्व पापे तो हरण करून घेऊन गेला. Because Jesus Christ is a sinless God, he is able to take the sins of the whole world. हमारा प्रभु यीशु मसीह पाप रहित ईश्वर है और उसी वही सारे जगत के पाप को हरण कर सकता है. आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त पाप रहित परमेश्वर आहे, तोच जे आहे या जगाचे पाप तो हरण करून घेऊ शकतो. In this verse we saw in 1 John 3:5,
In him is no sin. पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 5 वचन में हमने देखा उस यीशु मसीह में कोई पाप नहीं। आणि योहानाचे पहिले पत्र 3 अध्यायाच्या 5व्या वचनामध्ये आपण पाहिलो प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या ठाई पाप नाही। In 2 Corinthians 5:21 we see, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन में हम देखते हैं, दुसरे कोरिन्थीकरास पत्र 5 अध्याय याच्या 21व्या वचनामध्ये जेव्हा पाहतो for he had made him to be sin for us. और वो हमारे लिए पाप बन गया। आणि तो आपल्यासाठी पाप असे झाला Who knew no sin. जो पाप नहीं जानता था या पाप से अज्ञात था, ज्याला पाप ठाऊक नव्हते किंवा तो पापापासून विभक्त होता, That he might be made the righteousness of God through him. ताकि उसके द्वारा Amen. परमेश्वर की धार्मिकता हम लोग पा सके। त्याच्याद्वारे आपण देवाचे नीतिमत्व असे व्हावे। That means he did not have that sin in his dictionary, or he did not have in his mind, he did not know any sin. इसका अर्थ यह है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के मन में, उनके जीवन के शब्दकोश में, उनमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं था, पाप शब्द नहीं था। याचे अर्थ असे की आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये त्याच्या शब्दामध्ये कशाही प्रकारचे कोणतेही पाप नव्हते। The third aspect of the sinless God is in 2 Peter 2:22 we read. दूसरा पत्रोस 2 अध्याय के 22 वचन में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पाप रहित अवस्था के बारे में और एक पहलू जो हम पढ़ते हैं, दुसरे पेत्राचे पुस्तक 2 अध्यायाच्या 22व्या वचनानुसार आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पाप विरहित गोष्टीविषयी आणखी एक गोष्ट जेव्हा आपण वाचतो, He did no sin, neither was guile found in his mouth. और उसने कोई पाप नहीं किया और उसके मुंह में छल की बात पाई नहीं गई। आणि तो कोणतेही पाप केला नाही, त्याच्या मुखाच्या द्वारे कोणतेही छळाची गोष्ट निघाली नाही। Therefore, in him was no sin, he knew no sin, he did no sin. उसने पाप किया नहीं, वो पाप से अज्ञात था, उसमें पाप नहीं था। आणि तो पाप केला नाही, पापापासून तो अज्ञानी होता आणि त्याला पाप ठाऊक नव्हते। If any man sin, we have an advocate with the Father, that is our Lord and Savior Jesus Christ. अगर कोई पाप करता है तो हमारे लिए एक बिछवाई करने वाला वकील है, जो पिता के सामने हमारे लिए वकालत करता है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। आणि जर कोणी पाप करतो तर पित्यासमोर आपल्यासाठी वकिली किंवा मध्यस्थ करणारा तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। We cannot say that we have no sin. हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुझ में कोई पाप नहीं। आपण असे म्हणू शकत नाही की मजमध्ये पाप नाही। All have sinned and come short of the glory of God. हर किसी ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। आणि प्रत्येकाने पाप केले व देवाच्या गौरवातून ते विभक्त झाले। The word of God says in 1 John 2nd chapter verse 1 and 2. पहला यूहन्ना उसकी दूसरे अध्याय के 1 और 2 वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, पहिले योहानाचे पुस्तक पहिल्या अध्याय पहिल्या आणि दुसऱ्या वचनानुसार देवाचे वचन हे म्हणते, If any man sin, we have an advocate with the Father. अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो हमारे लिए एक सहायक पिता के सम्मुख में है। आणि जर एखादा व्यक्ती पाप करतो तर पित्याकडे आपल्याला एक सहाय्यक That is येशू आहे। Jesus Christ the righteous. और वो धर्मी प्रभु यीशु मसीह है। आणि तो नीतिमान प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। What is the meaning of advocate? और ये सहायक नहीं तो वकील का अर्थ क्या है? आणि हा सहाय्यक किंवा वकील याचे He अर्थ is the काय? intercessor between you and God. हमारे और परमेश्वर के मध्य में वही हमारे लिए मध्यस्थ है, विनती करने वाला है। आणि आपल्यामध्ये व पित्याच्या मध्ये तोच एक सहाय्यक म्हणजे मध्यस्थी He विनंती करणार आहे। is a mediator. और वो हमारे लिए एक मध्यस्थ है। आणि तो एक मध्यस्थी आहे। He is an advocate. When you confess your sins, he will take the confession to God the Father. जब कभी भी हमारे पाप को हम लोग स्वीकार करते हैं, वो एक सहायक होते हुए, वो एक वकील होते हुए हमारे सारे स्वीकार किए हुए पापों को पिता के सम्मुख में वो ले जाता है। जेव्हा आपण आपले पापे स्वीकार करतो, कबूल करतो, तेव्हा तो पित्याकडे आपले पापे घेऊन जाऊन तो प्रकट करतो। That's why in 1 John 2nd chapter verse 2 we read. इसी कारण से पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 2 में हम पढ़ते हैं, यामुळे पहिल्या योहानाचे पुस्तक दुसऱ्या अध्यायाच्या दुसऱ्या वचनामध्ये आपण या प्रकारे वाचतो, He is a propitiation for our sins. वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। आणि तो आपल्या पापाबद्दल प्रायश्चित Not आहे। only to our sins only, केवल वो हमारे पापों के निमित्त प्रायश्चित नहीं, केवळ आपल्या पापाबद्दल नव्हे, but for the sins of the whole world. किंतु वो सारे जगत के लिए भी, परंतु सर्व जगासाठी देखील He has taken all our sins on his body. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने शरीर में ले लिया। प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपले सर्व पापे तो त्याच्या शरीरावरती घेतला। He took all our infirmities. He was wounded for our transgressions. वो हमारे दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया और हमारे ही हर एक गुनाह के लिए वो घायल हुआ। आणि आपले सर्व निर्बलता
तो त्याच्या अंगी घेतला व आपल्यासाठी तो घायाळ झाला. The chastisement of our peace came upon him. और हमारे लिए शांति की जो मार था वो उसके ऊपर आई. आणि आपल्या शांतीसाठी फटके त्याच्यावर आले. By his stripes we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए. त्याच्या फटके खाल्ल्याच्या द्वारे आपल्याला आरोग्य प्राप्त होते. All that the man needs for redemption, Jesus Christ took everything and endured everything on his body. मनुष्य के छुटकारा के लिए जो भी कुछ चाहिए था वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में उठा लिया. हमारे लिए सब कुछ सहन किया. मनुष्याच्या सुटकेसाठी जे काही करायचे होते, जितके फटके खायचे होते, प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याच्या अंगी घेतले व सर्व काही आपल्यासाठी तो केला. Please read Isaiah 53 verse 5. कृपा करके यशायाह का किताब 53 अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे. कृपा करून यशायाचे पुस्तक 53 अध्याय याचे 5वें वचन वाचूया. परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं. खरे पाहिले असता तो आमच्या अपराधांमुळे घायाळ झाला, आमच्या दुष्कर्मामुळे ठेचला गेला. आम्हा शांती देणारी अशी शिक्षा त्यास झाली, त्यास बसलेल्या फटक्यांनी आम्हास आरोग्य प्राप्त झाले. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. He was wounded for our transgressions. और वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया. आमच्या दुष्कर्मामुळे तो ठेचला गेला. He was bruised for our iniquities. हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया. आमच्या अधर्मामुळे घायल झाला. The chastisement of our peace came upon him. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी. आम्हा शांती देणारी अशी शिक्षा त्यास झाली. And with his stripes we are healed. और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए. त्यास बसलेल्या फटक्यांनी आम्हास आरोग्य प्राप्त झाले. All that a man needs for redemption, Jesus Christ took everything on his body. मनुष्य के छुटकारा के लिए जो भी कुछ चाहिए था सब कुछ देखो यीशु ने अपने शरीर में उठा लिया. पहा, मनुष्याच्या सुटकेसाठी जे काही हवे होते, पहा परमेश्वराने त्याच्या अंगी घेतले आहे. The first purpose of Jesus to be manifested in this world was to take away our sins. सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जगत में प्रकट होने का कारण हमारे पापों को उठाने के निमित्त. आणि जे आहे प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये प्रकट होण्याचे प्रथम कारण आपले पातके तो त्याच्या अंगी घेण्यासाठी. Secondly, when we go to the word of God, दूसरा, जब परमेश्वर के वचन की ओर हम जब जाते हैं, दुसरे, जेव्हा आपण देवाच्या वचनाकडे येतो, in the book of Titus, 2nd chapter from verses 11 to 14 we read, तीतुस की किताब दूसरा अध्याय के 11 से लेकर के 14 तक के वचनों को पढ़ के देखने से तीतुचे पुस्तक दुसऱ्या अध्यायाचे 12 ते 14 वचन आपण वाचून पाहिले असता. what the grace of God can do in our life. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में क्या कुछ कर सकता है आणि देवाची कृपा आपल्या जीवनामध्ये काय करू शकते. And how the grace of God came upon this world. किस रीति से यह अनुग्रह संसार में प्रकट हुआ आणि कशा प्रकारे तो या पृथ्वीमध्ये कृपेच्या द्वारे तो प्रकट झाला. In verse 11 what do we read? 11 वचन में हम क्या पढ़ते हैं आणि 11व्या वचनात आपण काय For वाचतो. the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men. क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है. आणि ती देवाची कृपा प्रकट झाली कारण सर्व माणसांनी तारण देणारी. The grace of God appeared unto all men through our Lord and Savior Jesus Christ. सारे मनुष्य के लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्रकट हुआ है. आणि जे आहे सर्व मनुष्यांचे तारण होणारी देवाची कृपा येशूच्या द्वारे प्रकट झाली. In other words, Jesus was manifested to bring grace into this world. प्रभु यीशु मसीह संसार में अनुग्रह लाने के लिए ही प्रकट हुआ. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये कृपा घेऊन येण्यासाठीच तो प्रकट झाला. Grace will be given for the humble, for the undeserving. God will give us His grace. जो लोग योग्य नहीं है ऐसे नम्र होने से उनको परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रदान करता है. जे लोग अयोग्य आहेत परंतु नम्र होतात अशा लोकांना परमेश्वर त्याची कृपा तो देतो. In the Gospel according to St. John, 1st chapter verse 14 we read, यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय के पहला अध्याय के 14 वचन को पढ़ने के समय में योहान शुभवर्तमान पहिला अध्याय याचे 14व्या वचनामध्ये आपण वाचून पाहिले असता. the word was made flesh and dwelt among men. और परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ मनुष्य के मध्य में वास किया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचे जे वचन आहे ते देहधारी झाले आणि या पृथ्वीमध्ये ते प्रकट झाले. And we beheld His glory as the one or the only begotten Son of the Father. और हमने उसकी महिमा ऐसे देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा. आणि आम्ही त्याचे गौरव पाहिले ते पित्यापासून आलेले एकुलते
कोणत्या एकाचे गौरव असे full होते, of grace and truth. अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्ण। कृपा व सत्य यानी परिपूर्ण होते। And verse 16 and 17 says, और 16-17 वचन कहता है, आणि 16 आणि 17 वचन असे म्हणते, of his fullness have we received grace upon grace. और उसकी परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह को प्राप्त किया। त्याच्या परिपूर्णतेतून आपण सर्वांना कृपेवर कृपा मिळाली। Law came through Moses, मूसा के द्वारा व्यवस्था प्रकट हुआ, नियमशास्त्राने मोशेच्या द्वारे देण्यात आले, but grace came through our Lord and Savior Jesus Christ. किंतु अनुग्रह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। परंतु कृपा ही येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे देण्यात आली। This grace can do amazing things in your life. ये अनुग्रह आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत कामों को कर सकता है। हे कृपा तुमच्या जीवनात अद्भुत अद्भुत गोष्टी करू शकते। We have heard that living testimony, how God changed that believer's life. आज हमने सुंदर गवाही को देखा किस रीति से परमेश्वर के अनुग्रह ने उस भाई के जीवन को बदल डाला। आपण आज एक सुंदरशी साक्ष ऐकली, कशा प्रकारे देवाच्या कृपेने त्या व्यक्तीचे आयुष्य बदलून टाकले। The grace of God has changed you and me. The grace of God has changed so many thousands of people. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह देखो, आपको मुझको बदल डाला है। हजारों हजारों लोगों को इसी अनुग्रह ने रूपांतरित किया है। आणि पहा, देवाची कृपा तुम्हाला व मला बदलून टाकलेली आहे। हजारों हजारों लोकांना ही कृपा बदलत आहे। You may be dead in the sins of this world. इस संसार के पाप में आप मरे हुए होंगे, आणि या जगाच्या पापात तुम्ही कदाचित मेलेले But असणार, God will quicken us by his blood. लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा या परमेश्वर अपने लहू के द्वारा हमें जिला सकता है। परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या रक्ताच्या द्वारे तो आपल्याला संजीवित किंवा जिवंत करू शकतो। In Ephesians 2nd chapter we can read, एफिसी की पत्री दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, एफिसी पत्राच्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण वाचतो, from verses 1 to 4, 1 to 3 when we read, एफिसी की पत्री दूसरे अध्याय 1 से लेकर के 3 तक के वचनों को पढ़ देखने से एफिसी पत्र दुसऱ्या अध्याय पहिल्या वचनापासून तिसऱ्या वचनापर्यंत वाचून पाहिले असता our old condition. हमारे पुरानी अवस्था को हम वहां पर देख सकेंगे। आपली जुने अवस्था आपण या ठिकाणी पाहू शकतो। We were dead in the sins and the trespasses of this world. हम लोग इस संसार के पाप और अधर्म में मरे हुए थे, आणि या जगाच्या अपराध व पातकांमुळे आपण मृत्यू असे झालेले Or in होतो। other words, we were dead to God. हम लोग दूसरे शब्दों में ईश्वर के लिए मरे हुए थे। आणि दुसऱ्या शब्दामध्ये आपण येशूसाठी मेलो होतो। But when we read from the 4th verse onwards, लेकिन जब चौथे वचन से नीचे पढ़ के देखोगे, परंतु जेव्हा चौथ्या वचनापासून खाली आपण because वाचून our पाहतो, God is rich in his mercy, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो दया का धनी है, परंतु आपला परमेश्वर दया संपन्न देव आहे। we were dead in sins. हम जो पाप में मरे थे, आपण जे अपराधामुळे मृत्यू झालेलो होतो, God has quickened us together with him. उसके साथ उसने हमें जिलाया है। आणि परमेश्वराने त्याच्या सोबत आपल्याला जिवंत असे केले आहे। By grace you are saved. By grace we are saved. उद्धार के द्वारा आप उद्धार प्राप्त किए हो। हाँ, अनुग्रह के द्वारा ही हमने उद्धार प्राप्त किया है। कृपेच्या द्वारेच आपण तारण प्राप्त केलेले आहे। होय, कृपेच्या द्वारे आपले तारण झाले आहे। In verse 8 we read, by grace we are saved through faith. और 8 वचन को पढ़ने के द्वारा विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। 8व्या वचनामध्ये वाचून पाहिले असता विश्वासाच्या द्वारे कृपेच्या द्वारे आपण आपले तारण झाले आहे। What is the easy definition of grace? अनुग्रह के विषय में एक बहुत ही आसान परिभाषा क्या है? आणि कृपेच्या बद्दल एक व्याख्या काय आहे? It is the greatest gift given at Christ's expense. और यीशु मसीह के खर्च होने के द्वारा ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बहुमूल्य एक दान, एक वरदान। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतःला जे खर्च केले त्याच्याद्वारे मिळालेले एक उत्तम असे दान आहे। GRACE, grace means GRACE अंग्रेजी भाषा के ग्रेस शब्द का अर्थ, GRACE या अंग्रेजी शब्दाचे अर्थ greatest riches given at Christ's expense. यीशु मसीह के खर्च होने के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा एक दान। आणि येशू ख्रिस्ताने जे स्वतःला खर्च केले त्याच्याद्वारे मिळाले उत्तम असे दान आहे। By the gift of the grace of God only we are all seated in the presence of God. और प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह दान के द्वारा ही आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर विराजमान है। आणि त्या कृपेच्या दानाच्या द्वारेच आज आपण देवाच्या सम्मुखामध्ये आपण आहोत। And not only that, through faith we have been saved. न केवल इतना ही, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ।
केवळ एवढेच नव्हे, विश्वासाच्या द्वारे आपले तारण झाले. Amen. We have to trust and we have to have faith upon that Lord Jesus Christ. हमें भरोसा करना है और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी करना है. आले आणि आपल्याला भरोसा ठेवायचे आहे. प्रभु येशू ख्रिस्तावर आपल्याला विश्वास ठेवायचा Without आहे. grace and faith we cannot be saved. उद्धार अनुग्रह के बिना, विश्वास के बिना हमारा उद्धार नहीं होगा. आणि विश्वास वाचून, कृपे वाचून आपले तारण होणार नाही. Amen. That grace of God can change you and me. परमेश्वर का अनुग्रह आपको, मुझको बदल डालेगा. देवाची कृपा तुला व मला बदलून टाकेल. 200 years ago there was a man called John Newton. 200 साल पहले जॉन न्यूटन नामक एक व्यक्ति था. आणि 200 वर्ष आधी जॉन न्यूटन नावाचा एक व्यक्ती होता. And you know, his biography says that how God's grace changed his life. और उसका जीवन परिचय इस बात को अंकित करता है, बता करके देता है कि कैसे परमेश्वर के अनुग्रह ने उसके जीवन को बदल डाला. आणि त्याचे जीवन हे प्रकट करते की देवाची कृपा त्याचे जीवन कशा प्रकारे बदललेले आहे. He writes his testimony in a song called Amazing Grace. उसने अपने जीवन की गवाही एक गीत की रचना के द्वारा प्रकाश किया और वो गीत अंग्रेजी में अमेजिंग ग्रेस. आणि जे आहे त्याचे जीवन जे आहे तो एका गीताने जे आहे त्याचे तो या प्रकारे प्रकट करत आहे आणि तो म्हणत आहे अमेझिंग ग्रेस. His mother died at the age of 7. उसके 7वें साल की उम्र में उसकी मां मर गई. आणि 7 वर्षाचा तो असता त्याची आई मरण पावली. When he was 11 years old, he joined his father who was who had his own ship and he was the captain of the ship. और जब वो 11 साल का था तो उसके पिता का एक जहाज था और वो उसका कप्तान था. वो उसके साथ उसके जा मिला. आणि 11 वर्षाचा तो असताना त्याच्या वडिलाचे एक तारू होते आणि तो त्याचा कप्तान बनून त्याच्या सोबत तो चालत राहिला. In the ship, his life went from bad to worse. और उस जहाजी जीवन में इस बालक के, इस बच्चे का जीवन बद से बदतर हो गया. आणि त्या तारूच्या जीवनामध्ये त्याचे जे जीवन होते अधिक वाईटापासून अधिक वाईट झाले. He learned all the bad habits and he was drenched in the sins of this world. और वो सारी बुरी बुरी बातों को सीखने लगा, संसार के पापों में लिप्त होने लगा. आणि जे आहे तो या जगातील सर्व वाईट गोष्टी शिकू लागला. त्याच्यामध्ये तो विलुप्त असे राहू He was लागला. shifted from one ship to another ship. एक जहाज से दूसरे जहाज में उसका बदली हुआ. आणि एका जहाजामधून दुसऱ्या जहाजामध्ये त्याची बदली झाले. And his life became bad to worse again. और ऐसे ही बदली होते होते उसका जीवन और भी बद से बदतर होते चला गया. आणि या प्रकारे त्याचे जीवन अधिक वाईटापासून वाईट असे होत गेले. His dad sent a word to and called him back home. और उसके पिताजी ने एक पत्र को भेज करके अपने घर वापसी के लिए उसको बुलाया. आणि त्याच्या वडिलांनी त्याला एक पत्र लिहून म्हटले की घरी तू परत ये. As he was coming back home, जब वो घर की ओर वापस आ रहा था, जेव्हा तो घराकडे परत येत होता, a great storm came into the sea. उस समय में समुद्र में एक बहुत बड़ी आंधी तूफान आया. आणि त्या समुद्रामध्ये मोठे वादळ निर्माण झाले. And his ship also broke. और इस रीति से वो जहाज टूट गया. आणि त्याचे जे जहाज होते ते तुटून गेले. Now he was crying unto his mother's God, that is our Lord and Savior Jesus Christ. उस समय में ये बालक अपने माँ के उस ईश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर देख करके पुकारने लगा. आणि त्यावेळेस जे आहे त्याच्या आईचा परमेश्वर येशूकडे तो हाक देऊन आरोळी मारून ओरडू लागला. Whenever his father used to go into the ship, his mother used to kneel down and pray for their safety. जब कभी भी पिताजी जहाज में समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़ते थे, उस समय में जीवित रहने के दिनों में उसकी माँ उसके पिताजी की सुरक्षा के लिए घुटने में होकर के प्रार्थना किया करती थी. आणि त्याचे वडील जे आहे जहाजामध्ये जात असता त्याची आई जिवंत असताना त्यांच्या सुरक्षेसाठी तिची आई गुडघ्यावर उभी राहून प्रार्थना करीत असे. When he was in desperation, his cry was like the cry of the ravens. He cried unto God, Lord, save us, Lord. और उसके उस बुरी परिस्थिति के समय में जब जहाज टूट गया, उस समय में उसने जो ऊंची आवाज से चिल्लाते हुए, जोर से चिल्लाते हुए प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर तू मुझे बचा ले. आणि त्या वाईट परिस्थितीमध्ये त्याचे जहाज दुभागले असता तो या प्रकारे ओरडून प्रार्थना करू लागला, हे परमेश्वरा मला तू वाचव. God heard that wretched sinner's prayer. उस समय में, उस परिस्थिति में, उस अभागे पापी की प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली. आणि त्या वाईट परिस्थितीमध्ये त्या अभागी व्यक्तीची प्रार्थना परमेश्वराने ऐकली. The storm subsided and he was brought safely back home. वो जो आंधी तूफान थम गया, सुरक्षित किनारे पहुंच गया. आणि वादळ लाटा थांबले आणि तो सुरक्षित किनारी पोहोचला. He came back home as a changed person. वो जब घर वापस आया
ऐसा आया मानो वो संपूर्ण रीति से बदल चुका है। आणि जेव्हा तो घरी परत आला तर असे तो आला की तो परिपूर्णरित्या बदललेला आहे. And he started to compose this song, Amazing Grace. और उस समय में उसने गीत की रचना की, अमेजिंग ग्रेस। आणि त्या वेळेमध्ये तो गीत रचू लागला आणि तो म्हणू लागला की अमेझिंग It is ग्रेस. a very famous hymn. ये बहुत ही विख्यात और बहुत ही सुप्रसिद्ध गीत है। आणि हे खूप प्रसिद्ध झालेले हे गीत आहे. We'll sing that only that chorus for you all. केवल आपके लिए उसके कोरस को हम लोग केवल गाएंगे। फक्त ते कोरस आपण गाऊया. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. His life itself is, he composed a song on his life. अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के संबंध में इस अमेजिंग ग्रेस के रूप में एक सुंदर गीत की रचना उस व्यक्ति ने किया। आणि त्याच्या जीवनाविषयी, त्याच्या जीवनाच्या प्रत्येक परिस्थितीविषयी अमेझिंग ग्रेस या गीताची सुंदर रचना तो केलेला This आहे. amazing grace of our Lord and Savior Jesus Christ saved a wretch like me, he says. वो इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर की एक अद्भुत अनुग्रह ही है जो मुझ जैसे एक अभागे मनुष्य को उद्धार किया है। आणि तो या प्रकारे गीत म्हणत आहे, खरोखर मी जो अभागी होतो, माझ्या अभागी व्यक्तीला देवाची कृपाने तारलेले आहे. I once was lost, but now I am found. एक समय में खोया हुआ था, लेकिन प्रभु के अनुग्रह ने मुझे ढूंढ लिया। एका वेळेमध्ये मी हरवलो होतो, परंतु देवाच्या कृपेने मला शोधले आहे. I was blind, but now I see. मैं अंधा था कि तू अब मुझे दिखाई दे रहा है। आणि मी एक वेळेस आंधळा होतो, परंतु आज माझी नेत्र उघडे आहे. That amazing grace is in our midst. और वही अद्भुत अनुग्रह आज हमारे बीच में है। आणि तेच अद्भुत कृपा आज आपल्या मध्ये आहे. That grace can change you and me. और वही अनुग्रह आपको भी, मुझको भी बदल डालेगा। आणि तेच कृपा तुम्हास आणि मला बदलून It टाकेल. can change the filthiest sinner into a finest saint. जो वही अनुग्रह जो है बुरे से बुरे पापी को अनुग्रह के द्वारा एक बहुत ही उत्तम धर्मी मनुष्य करके बदल डालेगा। आणि तीच कृपा एक वाईट असलेला अमंगल कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीस ती कृपा एक व्यवस्थित होऊन बदलून टाकेल. Amen. That grace of God can change us drastically in a class. It can make us like God. और ये परमेश्वर का महिमा में अनुग्रह जो है एक मनुष्य को ईश्वर के समान बदल सकता है। आणि ही गौरवयुक्त कृपा एका मनुष्याला ईश्वराप्रमाणे बदलू शकते. That is the gospel. और यही सुसमाचार है। आणि हीच सुवार्ता आहे. What is the meaning of gospel? सुसमाचार का अर्थ क्या? आणि सुवार्तेचे अर्थ काय? It is the word of grace which can transform your life. ये परमेश्वर के वचन से भरा हुआ अनुग्रह है जो आपके जीवन को बदल डाले। आणि हे जे आहे वचनाने भरलेली कृपा आहे जे तुमच्या जीवनास बदलून टाकेल. The Son of God became a son of man to make you the sons of men, sons of God. परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र इसके लिए बन गया ताकि मनुष्य के पुत्र को ईश्वर के पुत्र में रूपांतरित कर डाले। परमेश्वराचा पुत्र मनुष्याचा पुत्र यासाठी झाला की मनुष्याच्या पुत्रास परमेश्वराचे पुत्र करावे. That is the gospel. और यही सुसमाचार है। आणि हेच शुभवर्तमान That is the आहे. word of his grace. और यही परमेश्वर के अनुग्रह का वचन है। आणि हेच देवाच्या कृपेचे वचन आहे. What is the third aspect of that of Jesus manifesting in this world? प्रभु यीशु मसीह संसार में प्रकट होने का तीसरा कारण क्या है? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये येण्याचे तिसरे कारण काय? In 1 John 3rd chapter verse 8, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय के 8 वचन को पढ़ देखने से पहिले योहानाचे पत्र 3 अध्यायाचे 8व्या वचनामध्ये पाहिले असता जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। पाप करणारा शैतानाचा आहे, कारण शैतान प्रारंभापासून पाप करीत आहे।
शैतानाची कृत्ये नष्ट करण्यासाठीच देवाचा पुत्र प्रगट झाला. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. For this purpose was the Son of God manifested. और इस कारण से परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ. आणि यासाठीच देवाचा पुत्र प्रकट झाला. That is, that he might destroy the works of the devil. ताकि वो शैतान के कामों को नाश कर डाले. याच्याद्वारे शैतानाची कृत्ये नष्ट करावे. That he may destroy all the works of the flesh and works of the devil. ताकि वो Jesus was manifest in this world. प्रभु यीशु मसीह संसार में इसके लिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के सारे कामों को, शरीर में दिखाई देने वाले सारे शैतानी कामों को नाश कर डालने के लिए. आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये यासाठी प्रकट झाला, शैतानाचे सर्व कृत्य आणि शैतानी कृत्य जे आपल्या शरीरात दिसून येतात त्या सर्वांना तो नष्ट करावे. Man is drinking iniquity like water. मनुष्य अधर्म को पानी के समान पी रहा है. आणि मनुष्य पापाला जे आहे पाण्यासारखे तो गिळत आहे. You see, the newspaper is filled with all bad news only. अगर आप अखबार कागज को देखोगे तो अखबार कागज में केवल बुरी बुरी खबर ही आप वहां पर देखोगे. आणि तुम्ही वर्तमानपत्राला पाहिले असता त्या वर्तमानपत्रामध्ये वाईट वाईट असे बातमी लिहिलेली असते. Everywhere there is iniquity going on. हर जगह में पाप और अधर्म बढ़ रहा है. प्रत्येक ठिकाणी पाप व अमंगल कृत्य वाढत आहेत. Peacelessness is going on in this world. इस संसार में शांति रहित अवस्था दिखाई देता है. हे जगामध्ये पूर्ण जगात शांती रहित गोष्ट दिसून येते. There is so many families which are getting broken up. कितने परिवार को टूटते हुए संसार में हम देखने पाते हैं. कितीतरी कुटुंब जे आहे या जगामध्ये तुटलेल्या अवस्थेत दिसून येतात. We have come to the end of the last days. हम लोग अंतिम दिनों में देखो आप पहुंचे हैं. आपण पहा शेवटच्या वेळेमध्ये येऊन पोहोचलो आहोत. There is no humanity at all. मानविकता, मनुष्यता आज संसार में दिखाई नहीं दे रहा. आज माणूस की या जगामध्ये कुठेही दिसून येत नाही. There is no natural affection. एक प्राकृतिक जो स्वभाव है, प्रेम भाव है, दिखाई नहीं दे रहा. आणि जे आहे प्राकृतिक जे आहे स्वभाव प्रेम या जगामध्ये दिसून येत नाही. People are lovers of their own selves. मनुष्य खुद को या अपने आप को प्रेम करने वाले बन गए. आणि मनुष्य स्वतःला तो प्रेम करणारा होऊन बदललेला आहे. People are lovers of pleasures more than the lovers of God. परमेश्वर से बढ़कर के सुख विलास को प्रेम करने वाले हो गए. परमेश्वराहून अधिक सुख विलासाला ते प्रेम करणारे होऊन बदलले They आहेत. are having the form of godliness, but they're denying the power thereof. ईश्वर के भक्ति के स्वरूप को धारण करते हैं लेकिन परमेश्वर के सामर्थ को इनकार करते हैं. आणि जे आहे परमेश्वराची भक्ती धारण न करता देवाच्या गोष्टीला ते घृणित करतात, धिक्कार करतात. That Son of God, Jesus Christ, was manifested in this world to destroy the powers of darkness, to destroy the works of the devil. हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में इसके लिए प्रकट हुआ कि अंधकार के सारे कामों को, शैतान के सारे कामों को संपूर्ण रीति से नाश कर डाले. आपला प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये यासाठी प्रकट झाला, शैतानाचे व अंधकाराचे सर्व दुष्कृत्य तो पूर्णपणे नष्ट करावे. If you trust and come to that God, He will save you from the works of the devil. अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए, भरोसा रखते हुए अगर आओगे तो शैतान के सारे कामों को जो आपके जीवन में है परमेश्वर संपूर्ण रीति से विनाश कर डालेगा. जर तुम्ही देवावर विश्वास ठेवीत, भरोसा ठेवीत तुम्ही देवाकडे आलात तर तुमच्यातील सर्व शैतानाचे कृत्य परमेश्वर समूळ नष्ट करेल. But one more man of God in the Holy Bible, we read about St. Paul, the testimony of St. Paul. हम लोग धर्मशास्त्र में और एक व्यक्ति संत पौलुस के जीवन को साक्षी स्वरूप देखने पाते हैं. आणि आपण पवित्र शास्त्रामध्ये एक उदाहरणार्थ एक साक्ष रूपामध्ये प्रेषित पौलाला आपण पाहू शकतो. In 1 Timothy 1st chapter from verses 12 to 14, पहले तिमोथी पहले अध्याय के 12 से लेकर के 14 तक के वचनों को पढ़ के देखने से पहिले ते त्याला पत्र पहिले अध्याय 12 वचनापासून ते 14 वचनापर्यंत वाचून पाहिले असता how God changed his life we can see. और देखो किस रीति से पौलुस के जीवन को परमेश्वर ने बदल डाला. हम इस बात को वहां पर देखने पाएंगे. आणि पहा परमेश्वराने पौलाचे जीवन कसे बदलले हे आपण या ठिकाणी पाहू शकतो. In 1 Timothy 1:12 to 14, what do we read? पहले तिमोथी पहले अध्याय के 12 से लेकर के 14 तक के वचन में हम क्या पढ़ते हैं? तिमोथेला पहिले पत्र पहिले अध्यायाचे 12 वचनापासून ते 14 वचनापर्यंत आपण काय He वाचतो. says, I was a blasphemer earlier. और वो कहता है कि मैं पहले तो निंदा करने वाला था. आणि तो म्हणत आहे पूर्वी मी निंदक होतो. I was a persecutor and injurious. मैं सताने वाला, अंधेर करने वाला था. आणि मी छळ करणारा व जुलमी होतो. But God transformed his life into a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को रूपांतरित कर दिया ताकि वो अन्य जातियों के मध्य में प्रचार कर सके. आणि तो प्रभू येशू ख्रिस्त
ख्रिस्ताने त्याचे जीवन बदलले की अन्य जातीमध्ये तो देवाचे सुसमाचार गाजवावे. See in 2 Timothy 1:11, please read. दूसरा तिमोथी पहला अध्याय के 11 वचन को कृपा करके पढ़े. दुसरे तिमोथी पत्र पहिल्या अध्यायाचे 11वें वचन कृपा करून वाचा. जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा. मला त्या सुवार्तेच्या घोषण करता प्रेषित व शिक्षक असे नेमिले होते. Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. Previously, what was his life? पहले उसका जीवन कैसा था? पूर्वी त्याचे जीवन कसे होते? He was a blasphemer, he was a persecutor, he was an injurious man. पहले उसका जीवन एक सताने वाला, निंदा करने वाला, अंधेर करने वाला था. आणि पूर्वी त्याचे जीवन निंदक, छळ करणारा व जुलमी प्रकारे होते. Now God has made him a preacher. लेकिन परमेश्वर ने अभी देखो उसे प्रचारक बना दिया. परंतु आता पहा परमेश्वराने त्याला सुवार्तिक God असे has made him बदललेले an आहे. apostle and teacher of the Gentiles. परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों के लिए एक प्रेरित और एक उपदेशक बना दिया. आणि पहा परमेश्वर अन्य जातीसाठी त्याला प्रेषित आणि सुवार्तिक असे बनविलेले आहे. Transformation made that Saul into Saint Paul. और यही रूपांतर उस साउल को संत पौलुस के रूप में बदल डाला. आणि हे रूपांतर जे आहे शौलाला प्रेषित पौलामध्ये ते बदलले. In Acts 9 chapter, we can see how that light shone upon him, how he heard the voice of God, and the voice of God changed his life. प्रेरितों के काम के 9 अध्याय को पढ़ने के समय में किस रीति से उसके जीवन में वो ज्योति चमका, वो आवाज सुनाई दिया और उस ज्योति ने, उस आवाज ने साउल के जीवन को पौल में परिवर्तन कर दिया. प्रेषितांचे कृत्य 9व्या अध्यायामध्ये आपण वाचू शकतो त्या शब्दाने त्याचे अंधकारमय जीवन कशा प्रकारे शौलापासून त्याला पौल मध्ये बदलले. Tonight, if you give your heart to the Lord Jesus Christ, He can transform your life. अगर आज की रात आप अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को दोगे तो वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को भी रूपांतरित कर डालेगा. आज रात्री तुमचे जीवन तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताला दिले असता प्रभू येशू ख्रिस्त तुमचे जीवन रूपांतरित करेल. But a person has to repent for his sins. किंतु चाहिए उससे लिए वो मनुष्य अपने पापों के लिए पश्चाताप करे, अनुताप करे. आणि यासाठी तुम्हाला तुमच्या पापासाठी पश्चाताप करावे लागेल. तुमचे हृदय अनुतप्त करावे लागेल. We can see 2000 years ago, John the Baptist and Jesus Christ also preached the word of God and said, repent. और हम लोग परमेश्वर के वचन में देखने पाते हैं आज से तकरीबन 2000 साल पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का प्रचार किया, मन फिराओ. आणि जे आहे आपण जवळपास 2000 वर्ष आधी या प्रकारे पाहतो प्रेषित योहान आणि प्रभू येशू ख्रिस्त या प्रकारे सुवार्ता गाजित होते, तुम्ही मन बदला, पश्चाताप करा. According to John 3rd chapter verse 3, we can see a person has to be born again to see the kingdom of God. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 3 में हमने देखने पाते हैं परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए एक मनुष्य को चाहिए वो नई सिरे से जन्म ले. योहान शुभवर्तमान 3रे अध्याय 3ऱ्या वचनामध्ये पाहतो एका मनुष्याला रूपांतर होण्यासाठी त्याला पाण्याने जन्म घ्यावे लागेल. But to enter into the kingdom of God, he has to be born of water and of the Spirit. किंतु अगर उसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो उसे चाहिए वो जल और आत्मा में जन्म ले. आणि जे आहे त्याला स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश करायचे असेल तर जल आणि आत्म्याने त्याला जन्म घ्यावे लागेल. As the word of God is being preached, you have to be pricked or you have to be convicted for your sins. जैसे जैसे परमेश्वर का वचन आपको प्रचार किया जा रहा है अपने अपने पापों को आप अपने जीवन में कबूल करते हुए उसके लिए एक पश्चाताप आप लोग लेकर के आना चाहिए. ज्या प्रकारे देवाचे वचन तुम्हाला सांगण्यात येत आहे तुमच्या जीवनातील सर्व पातकांसाठी तुम्ही पश्चाताप करा, In कबूल the करा. first sermon of Peter, the people were pricked in their hearts. जब पतरस ने पहला प्रचार किया उसके पहले प्रचार को सुन करके लोगों का हृदय छिद गया. आणि ज्या वेळेस पेत्र पहिल्यांदा प्रचार करीत होता तेव्हा लोकांचे हृदय फाटून गेले. In Acts 2:37 we read, we have to be convicted or we have to be pricked in our hearts. प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 37 वचन में हमारे पापों के लिए हमें पश्चाताप करना है. हमारा हृदय परमेश्वर के वचन को सुनकर के छिद जाना चाहिए. आणि जे आहे प्रेषितांचे कृत्य 2रा अध्यायाचे 37व्या वचनाप्रमाणे आपण देवाचे वचन ऐकले असता आपले हृदय जे आहे छेदून गेले पाहिजे. So what is the third aspect of the born again experience? नए सिरे से जन्म लेने का तीसरा अनुभूति क्या है? आणि नव्याने जन्म घेणे याचे तिसरे अनुभव काय? He has to confess his sins. उसको चाहिए कि वो अपने सारे पापों को स्वीकार करे. आणि त्याला असे करावे लागेल की त्याचे सर्व पापांचे
तो स्वीकार करावे लागेल. In 1 John 1:9, what do we read? पहले यूहन्ना अध्याय 1:9 में हम क्या पढ़ते हैं? पहिले योहानाचे पत्र पहिल्या अध्यायाचे 9व्या वचनामध्ये आपण काय वाचतो? If we confess our sins, अगर हमारे पापों को हम लोग कबूल करेंगे, जर आपण आपले पाप कबूल केले He असता, is just and faithful to forgive all your sins and to cleanse you from all your unrighteousness. हमारे सारे अधार्मिकता से पापों से क्षमा करने के लिए वो धर्मी और विश्वास योग्य ईश्वर है. आणि आपल्या सर्व अनितीपासून शुद्ध करण्यासाठी तो विश्वासनीय व न्यायी आहे. He that confesseth his sins shall prosper. जो कोई अपने पाप स्वीकार करेगा वो आशीष पाएगा. जो कोणी आपले पाप स्वीकार करेल तो आशीर्वाद प्राप्त करेल. For example, we can see about the life of David. हम लोग दाऊद के जीवन को उदाहरण स्वरूप देखेंगे तो जेव्हा आपण दाविदाचे जीवन एक उदाहरण स्वरूपामध्ये पाहतो, David committed sin and went far away from God. दाऊद ने पाप किया, ईश्वर से दूर चला गया. आणि दावीद पाप केला व परमेश्वरापासून तो दूर गेला. In Psalm 51 we read how he is pleading for the mercies of God. 51 भजन में हम लोग दाऊद के प्रार्थना को देखने पाते हैं कि किस रीति से वो ईश्वर के सम्मुख में विनती विश्वाई कर रहा है. आणि 51व्या स्तोत्रामध्ये आपण पाहतो तो परमेश्वराकडे त्याच्या पापासाठी कशा प्रकारे मध्यस्थी करत आहे, विनंती करीत आहे. When he acknowledged his sin, जब उसने अपने पाप को मान लिया, जेव्हा तो त्याचे पाप स्वीकार when he केला, confessed his sin, जब उसने अपने पाप को स्वीकार किया, जेव्हा तो त्याचे पाप कबूल केला, he was forgiven, he became a blessed man. ओ परमेश्वर उसके पाप को क्षमा किया, वो एक धन्य व्यक्ति, ईश्वर का एक धन्य पुरुष होकर के बदल गया. आणि पहा परमेश्वर त्याचे पापे क्षमा करून परमेश्वराने त्याला नीतिमान असे मनुष्य, धन्य असा मनुष्य असे बदलले. What is the fourth step? और इस अनुभव का चौथा अनुभव क्या है? आणि या अनुभवाची चौथी गोष्ट We काय have आहे? to reconcile with one another. एक दूसरे के साथ चाहिए कि हम लोग मेल मिलाप करें. एकमेकांसोबत आपण समेट केले पाहिजे. We have to reconcile with our brother. हमारे भाइयों के साथ चाहिए कि हम मेल मिलाप करें. आपल्या भाऊबंधांसोबत आपल्याला जे आहे समेट करावे We लागेल. were also far away, but Jesus came in between and reconciled us with God. हम भी हमारे परमेश्वर से बहुत दूर थे कि तू देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ रीति में हमारे बीच में आया. हम जो दूर थे हमारे परमेश्वर से दोबारा हमारा मेल कराया. पहा आपण देखील प्रभू येशू ख्रिस्तापासून पित्यापासून दूर होतो. आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्यामध्ये मध्यस्थी होऊन आला आणि तो जे आहे आपल्याला पित्याचा जवळ तो घेऊन आलेला आहे. In Matthew 5 verse 23 and 24 we read, Matthew- we have to reconcile with our brother and come with a gift and place it on the altar. मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय के 22-23 वचन को पढ़ करके देखने के समय में वेदी के सम्मुख में भेंट लाने से पहले हमें चाहिए कि अपने भाई से मेल मिलाप करें और उसके बाद आकर के वेदी के ऊपर भेंट चढ़ाए. आणि जे आहे मत्ती शुभवर्तमान 5 अध्यायाच्या 22व्या वचनामध्ये पाहतो, जेव्हा आपण जे आहे बलिदान चढविण्यासाठी येतो तेव्हा आपल्या भावाकडे जाऊन आपण त्यासोबत समेट केले पाहिजे. त्यानंतर आपण बलिदान चढविले पाहिजे. What is the fifth step? That is called restitution. और ये पांचवा अनुभव इस अनुभव में है और वो है फेर देना. आणि जे आहे पाचवे अनुभव हे आहे की आपण मोबदला देणे. We can see that in the life of Zacchaeus. और हम लोग जक्काई नामक मनुष्य के जीवन में इस उदाहरण को देखने पाते हैं. आणि जक्कई नावाच्या मनुष्यामध्ये हे उदाहरण आपण पाहू शकतो. When Jesus entered his house, जब प्रभु यीशु मसीह जक्काई के घर में गया, जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त जक्कईच्या घरी गेला, there was 3 changes in his life. उस समय में जक्काई के जीवन में 3 प्रकार का परिवर्तन आया. आणि त्यावेळेमध्ये जक्कईमध्ये 3 प्रकारचे परिवर्तन आले. His heart was changed, his mind was changed, his life was changed. उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसका मन परिवर्तन हुआ, उसका जीवन बदल गया. त्याचे हृदय, त्याचे मन आणि जीवन परिवर्तित झाले. In Luke's Gospel 19th chapter from verses 8 to 10 we read that. लूक रचित सुसमाचार अध्याय 19 8 से लेकर के 10 तक के वचनों में हम इस बात को देखने पाएंगे. लूक शुभवर्तमान 19 अध्याय 8 वचनापासून ते 10 वचनापर्यंत आपण हे गोष्टी पाहू शकतो. Luke 19 verses 8 to 10 we read that. लूक रचित सुसमाचार अध्याय 19 8 से लेकर के 10 तक का वचन. लूक शुभवर्तमान 19 अध्याय याचे 8 ते 10 वचन. When Jesus heard his confession, जब जक्काई के स्वीकार को यीशु मसीह ने सुना, जेव्हा जक्कईचे पश्चाताप परमेश्वराने ऐकले, Jesus said, this day has salvation come to thine house. यीशु मसीह ने तुरंत कहा कि आज के दिन में देखो इस घर में उद्धार
उद्धार आया है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणत आहे आज या घराला तारण प्राप्त झाले आहे. For as much you shall be called the son of Abraham. और वो इस कारण से अब अब्राहम का संतान कहलाएगा। आणि यामुळे हा ही अब्राहमाचा पुत्र असं म्हणण्यात येत आहे. The son of man is come to seek and to save that which was lost. क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उद्धार करने को आया है। कारण मनुष्याचा पुत्र हरवलेले शोधावयास व तारावयास आलेला See आहे. how that sinner Zacchaeus was transformed into a saint. और देखो यहाँ पर किस प्रकार ये पापी जक्कई एक संत होकर के बदल गया। पहा एक पापी जक्कई कशा प्रकारे संत होऊन बदललेला आहे. People are afraid of him. लोग इस जक्कई को देख के डरते थे। आणि या जक्कईला पाहून लोक घाबरत होते. By false accusation he used to extract money from them. झूठा झूठा आरोप लगा करके लोगों से वो पैसा ऐंठता था, लेता था। आणि खोटे दोषारोप करून तो लोकांकडे पैसे लुटत होता. Now God changed his life. लेकिन देखो जक्कई के जीवन को परमेश्वर ने बदल डाला। परंतु पहा परमेश्वरने जक्कईचे जीवन बदलून He टाकले. says, half of my goods I'll sell and give to the poor. अब जक्कई इस प्रकार कहता है कि मेरे संपत्ति का आधा भाग मैं कंगालों को दे दूंगा। आणि तो आता या प्रकारे म्हणत आहे माझा संपत्तीचा अर्धा हिस्सा मी गोरगरिबांना देऊन If I've देईन. taken anything by false accusation, I'll give fourfold. अब वो जक्कई इस प्रकार कहता है अन्याय से अगर मैंने किसी का लिया है 4 गुना लौटा दूंगा। आणि तो या प्रकारे म्हणत आहे अन्यायाने जे काही मी घेतलं होतं 4 पट मी ते परत करीन. When God heard the testimony, God said, this day has salvation come into this जब house. ये गवाही प्रभु यीशु मसीह ने सुना तुरंत यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। आणि ज्या वेळेस येशू ख्रिस्ताने हे साक्ष ऐकली त्यावेळेस येशू म्हणाला आज या घरास तारण प्राप्त झाले आहे. The sixth step is called justification. और छठा उद्धार का अनुभव है वो है धर्मी ठहराया जाना। आणि जे आहे 6वे उद्धाराचे तारणाचे अनुभव हे आहे नीतिमान ठरविणे. For being justified, you have to humble yourself and pray in the presence of God. अगर आपको धर्मी ठहराया जाना है तो चाहिए कि अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करें। आणि जर तुम्ही नीतिमान व्हायचे असेल तर तुम्ही स्वतःला नम्र करून देवाच्या सम्मुखामध्ये तुम्ही प्रार्थना केली पाहिजे. In Luke's Gospel 18th chapter from verses 10 to 14 we can see 2 people who went to the temple to pray. लूका की सुसमाचार के अध्याय 18 में 10 से लेकर के 14 तक के वचनों को पढ़ करके देखोगे तो वहां पर आराधनालय में 2 व्यक्ति प्रार्थना करने को गए। लूकशी वर्तमान 18 अध्यायाची 10व्या वचनापासून ते 14व्या वचनापर्यंत आपण वाचून पाहतो देवाच्या मंदिरात प्रार्थना करण्यास 2 व्यक्ती गेले. One was Pharisee, he prayed, I like that with pride he prayed. वहां पर सबसे पहला व्यक्ति जो प्रार्थना करने को गया वो एक फरीसी था। मैं के घमंड से प्रार्थना कर रहा है। आणि त्या ठिकाणी गेलेला प्रथम व्यक्ती तो परशी होता आणि तो मी म्हणत तो प्रार्थना करीत होता. But Luke 18th chapter verse 13 and 14 we read, लेकिन लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 13 14 वचन को पढ़ के देखने से परंतु लूकशी वर्तमान 18 अध्याय याचे 13वा आणि 14वा वचन वाचून पाहिले असता the publican's prayer was a very short prayer but it was a very profound prayer. लेकिन वहां पर हम लोग ये चुंगी लेने वालों की प्रार्थना को देखते हैं बहुत ही छोटा प्रार्थना और बहुत एक सुंदर एक प्रार्थना। आणि जे आहे आपण या ठिकाणी एका जगादाराची प्रार्थना आपण त्या ठिकाणी पाहतो तो एक लहानशी प्रार्थना केला आणि एक सुंदरशी प्रार्थना तो Only केलेला आहे. 7 words in that prayer. Oh God, be merciful to me a sinner. उसने केवल अंग्रेजी शब्दों में ऐसा प्रार्थना किया कि हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। आणि तो 7 शब्दामध्ये तो प्रार्थना केला हे देवा मस पापेवर दया कर. That 7 words prayer justified him. और वो 7 शब्दों का प्रार्थना उसे धर्मी ठहराया। आणि त्या 7 शब्दाची प्रार्थना परमेश्वरने त्याला नीतिमान बदलले. The Pharisee went as he came. But the publican, he became a righteous man and went back. ये फरीसी प्रार्थना करने के लिए जो आराधना में आया था जैसा आया था वैसे ही लौट गया, लेकिन ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी ठहराया गया और वो वहां से लौटा। आणि जे आहे परोशी जे आहे प्रार्थना करण्यासाठी जसा आला होता तसा तो परत गेला, परंतु जकातदार जसा आला होता देवाच्या दृष्टीत तो नीतिमान गिनला गेला. Justification is very important in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन के लिए धर्मी ठहराया जाना बहुत ही अहम है, मुख्य बात है। आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये आपण नीतिमान ठरविले जाणे खूपच महत्वाची The गोष्ट meaning आहे. of justification is whatever we do, good or bad, it is written in the book of God. और धर्मी ठहराए जाने का अर्थ जो भी कुछ हम लोग बुरे भला कामों को करते हैं वो सारी बातें परमेश्वर की पुस्तक में लिखा जाता है।
आणि नीतिमान ठरविणे म्हणजे काय, तर आपण जे काही चांगले व वाईट कृत्य करतो ते देवाच्या पुस्तकात But when you लिहिण्यात येते. confess your sins with his own blood, God will blot out all the wrong things which you have done. लेकिन जब हम लोग हमारे सारे पापों को परमेश्वर के समय में स्वीकार करते हैं, उस समय में प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस पुस्तक में हमारे जीवन के संबंध में जो भी कुछ बुरी बुरी बातें लिखा हुआ है वो लहू के द्वारा मिठा डालता है. आणि जेव्हा आपण आपले सर्व पापे पातके आपण कबूल करतो, तेव्हा आपले सर्व पातके जे पुस्तकात लिहिण्यात आलेले आहे येशूच्या रक्ताच्या द्वारे पुसण्यात येते. Through that you are justified from your sins. इस रीति से आप आपके पापों के द्वारा या उससे आप धर्मी ठहराए जाते हो. आणि या प्रकारे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या द्वारे तुम्ही नीतिमान ठरविले जाता. The seventh step is sanctification. और सातवां उद्धार का जो कदम है वो सातवां अनुभव है शुद्धिकरण. आणि सातवे तारणाचे अनुभव हे आहे We ते are पवित्रीकरण किंवा शुद्धीकरण आहे. We are sanctified by his blood. उसके लहू से हम शुद्ध किए गए. ते त्याच्या रक्ताच्या द्वारे आपले शुद्धीकरण We होते. are sanctified by his word. उसके वचन से शुद्धिकरण को पाए. त्याच्या वचनाच्या द्वारे आपण शुद्धीकरण प्राप्त As you करावे. receive the Holy Spirit, you are sanctified by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाने के समय में आत्मा के द्वारा एक शुद्धिकरण हमारे जीवन में होता है. पवित्र आत्मा प्राप्त करत असता आत्म्याच्या द्वारे आपल्या जीवनाचे शुद्धीकरण होते. So we have to use the blood of God, blood of Jesus, word of God and the Spirit, and we have to grow in sanctification. इसी के लिए हमें चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को लहू को दावा करते हुए वचन को स्वीकार करते हुए आत्मा में हम आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं. आणि जे आहे देवाच्या वचनाच्या द्वारे, देवाच्या रक्ताच्या द्वारे, देवाच्या आत्म्याच्या द्वारे आपण ख्रिस्ती जीवनात वाढत गेले That पाहिजे. will make you a Christian. That will make you a follower of Christ. वही आपको मसीही बनाएगा, वही आपको मसीह का अनुकरण करने वाला बनाएगा. आणि तेच तुम्हास जे आहे ख्रिस्ती बनवेल, ख्रिस्ताचे अनुकरण करणाऱ्याचे ते बनवेल. What is the meaning of that Christian? मसीह बोलने से क्या, ख्रिस्त जीवन म्हणजे काय, It is a mind through which Christ thinks. और एक ऐसा मन को धारण करना जिस मन से मसीह सोचता है, चिंता करता है. आणि असे एक मन आपण धारण केले पाहिजे ज्या मनाने प्रभू येशू ख्रिस्त विचार करतो. You become a voice of God through which Christ speaks to you. आप परमेश्वर की एक ऐसी आवाज बन जाओगे जिसके द्वारा मसीह आपके माध्यम से बातें करे. आणि तुम्ही एक ख्रिस्ताची अशी वाणी बनाल ज्याच्या द्वारे परमेश्वर तुमच्या सोबत बोलेल. A Christian is a heart through which Christ loves. और मसीह बोलने से एक ऐसा एक हृदय है जिस दिल के द्वारा वो औरों को प्रेम करता है. आणि ख्रिस्ती म्हणजे असे हृदय आहे जे इतरांना प्रेम करते. Christian is a hand through which Christ helps. क्रिश्चियन बोलने से एक ऐसी हाथ जिसके द्वारा परमेश्वर या मसीह सहायता करता है. आणि ख्रिस्ती म्हणजे असे हात आहे जे इतरांना जे आहे ख्रिस्तामध्ये मदत करते. Your entire life has changed. जीवन पूरा बदल गया. आणि पूर्ण जीवन बदलले. What is the fourth aspect of Jesus to be manifested? इस संसार में यीशु के प्रकट होने का चौथा कारण क्या है? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये प्रकट होण्याचे चौथे कारण काय. In 1 John 4 chapter verse 9, पहले यूहन्ना चौथे अध्याय के 9 वचन में, पहिले योहनाचे पत्र 4 अध्याय याच्या 9व्या वचनानुसार, by this was manifested the love of God. और इसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ. आणि या प्रकारे ख्रिस्ताची प्रीती प्रकट झाली. Because God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. और प्रभु परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र के संसार में भेज दिया ताकि उसके द्वारा हम जिए या जीवन पाए. आणि देवाने आपला एकुलता एक पुत्र जगात पाठविला यासाठी की त्याच्याद्वारे आपणास जीवन प्राप्त Not व्हावे. living by our own self, but living through Jesus. हम लोग अपने आप से नहीं जी रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा यीशु में हम जी रहे हैं. आपण आपल्या स्वतःहून जीवन जगत नाही, प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आपण जीवन जगत आहोत. Those who have accepted Jesus as personal Savior, shout a hallelujah, saying that we are living through Jesus. जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो अपने हाथों को उठाते हुए जोरदार हालेलुया कहे, इस बात को बताने के लिए कि अब मैं जो जीवित हूं मसीह में जीवित हूं. जितके लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताला स्वीकार केले आहे, तुम्ही जे आहे आम्ही जीवत आहोत, ते येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे म्हणणारे एक जोरात हालेलुया म्हणा. Hallelujah. We are living through our Lord Jesus हम Christ. जो जीवित है वो मसीह यीशु के द्वारा जीवित है. आपण जे जिवंत आहोत प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे जिवंत आहोत. That purpose only Jesus came into the world to reveal that love of God towards us. हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकाश करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह संसार में प्रकट हुआ. आणि त्याचे प्रेम आपल्याद्वारे प्रकट करण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवरती प्रकट झाला. What is the fifth aspect of Jesus being manifested? यीशु मसीह के संसार में प्रकट होने का पांचवा
पांचवा कारण क्या है? प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये प्रकट होण्याचे पाचवे कारण काय In 1 John 1 verse 2 and 3 says, पहले यूहन्ना पहले अध्याय के 2-3 वचन में पहिल्या योहानाचे पुस्तक पहिले अध्याय दुसरे आणि तिसरे वचन, that life was manifested through Jesus. वो जीवन मसीह यीशु के द्वारा प्रकट हुआ आणि ते जीवन येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे प्रकट झाले And we have seen and heard that. और हमने उसको देखा है, उसकी हमने सुना है आणि ते आम्ही पाहिले आहे आणि ते आम्ही ऐकले आहे That we are declaring unto you. और वही उसी का गवाही हम देते हैं आणि त्याची साक्ष आम्ही तुम्हास देतो He may have fellowship with us. ताकि तुम्हारी सहभागिता हमारे साथ हो आणि तुमची सहभागिता आमच्या सोबत व्हावे And our fellowship is with the Father and Lord Jesus Christ. क्योंकि हमारी सहभागिता पुत्र और प्रभु यीशु मसीह के साथ है आपली सहभागिता तर पित्या बरोबर व त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या बरोबर आहे That we may have fellowship with the apostles. That we may have fellowship with God the Father and His Son. For that purpose only Jesus was manifested. हमारी सहभागिता प्रेरितों के साथ होने के लिए, हमारी सहभागिता पिता और उसके पुत्र यीशु के साथ होने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में प्रकट हुआ। आपली सहभागिता प्रेषितांच्या सोबत, आपली सहभागिता पित्यासोबत येशू सोबत होण्यासाठी आपला प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये प्रकट झाला। 2 more verses I'll tell and finish. और 2-3 वचनों को मैं बोल के समाप्त करूंगा। 2-3 वचने सांगून मी समाप्त In करेन। Galatians 4 verse 4 and 5. गलाती की पत्री 4 अध्याय के 4-5 वचन में गलातीकरास पत्र 4 अध्याय याचे 4 आणि 5 वचनानुसार Jesus Christ was manifested so that He may redeem us from the law. प्रभु यीशु मसीह हमें व्यवस्था से छुड़ाने के लिए संसार में प्रकट हुआ आणि प्रभू येशू ख्रिस्त नियमशास्त्रापासून आपल्याला सोडविण्यासाठी प्रभु येशू ख्रिस्त प्रकट झाला That we might receive the adoption of sons. ताकि हम परमेश्वर के लेपालक होकर के परमेश्वर के संतान कहलाएं। आणि आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे जन्मलेले आणि देवाचे पुत्र असे व्हावे Because we are sons. क्योंकि हम पुत्र हैं, आपण देवाचे पुत्र आहोत Because God has redeemed us from the law. क्योंकि परमेश्वर को व्यवस्था से छुड़ा लिया, कारण परमेश्वराने नियमशास्त्रापासून आपल्याला सोडविले We can call unto God the Father, Abba Father. अभी हम हमारे पिता परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। आता आपण परमेश्वराला हे देवा हे आब्बा म्हणून आपण बोलू शकतो Through shedding His blood, He has adopted us so that we may become His sons and daughters. प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया और उसके लहू के बहा लिए जाने के द्वारा लेपालक होने के लिए हमें चुन लिया, हमें गोद ले लिया, ताकि हमारे ईश्वर को हम लोग अब्बा पिता करके पुकार सके। आपला प्रभू येशू ख्रिस्त जे आहे आपल्याला खंडणी भरून जे आहे तो विकत घेतलेला आहे यासाठी की आपण हे पिता हे आब्बा म्हणून त्याला हाक That's मारावे why God has showered His Holy Spirit upon us. क्यों परमेश्वर ने को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया? का परमेश्वराने पवित्र आत्म्याचे अभिषेक He दिले has sent the Holy Spirit and He has adopted us and given us the spirit of adoption. पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा लेपालक की आत्मा परमेश्वर में प्रदान किया आणि है। पवित्र आत्म्याच्या द्वारे खंडणी भरण्याची आत्मा परमेश्वराने आपल्याला दिलेली आहे What is the seventh aspect of Jesus coming into this world? इस संसार में यीशु मसीह प्रकट होने का 7वां पहलू क्या है? आणि प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये प्रकट होण्याचे 7वे कारण काय Read that 1 Timothy 3:16. पहला तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे। पहिले तिमोथीकरास पत्र 3 अध्याय याचे 16वे वचन वाचूया और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। सुभक्तीचे रहस्य निर्विवाद मोठे आहे। तो देहाने प्रकट झाला, आत्म्याने नीतिमान ठरला, देवदूतांच्या दृष्टीत पडला, त्याची राष्ट्रात घोषणा झाली, जगात त्याच्यावर विश्वास ठेवण्यात आला, तो गौरवांत वर घेतला गेला। And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. This is great is the mystery of godliness. और ये भक्ति का भेद बड़ा है। आणि या सुभक्तीचे रहस्य निर्वादित आहे The life of Jesus is mentioned in this verse. यहाँ पर इस वचन में प्रभु यीशु मसीह का जीवन के बारे में उल्लेख है। या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनाविषयी हे वचन उल्लेख करते What is the meaning of godliness? और ये भक्ति का अर्थ क्या है? आणि या भक्तीचे अर्थ काय That to make us like God, that God likeness or Christ likeness. God wants to make you like Him.
और भक्ति का अर्थ या भक्ति का मतलब यह है कि हमें ईश्वर की समान बनाना, ईश्वर की वही समानता हमारे अंदर लेकर के आना। आणि या सुभक्तीचे रहस्य हेच आहे की आपल्या सर्वांना येशू ख्रिस्ताच्या स्वरूपात बदलावे. For that purpose Jesus was manifested. यही कारण से प्रभु यीशु मसीह संसार में प्रकट हुआ। यामुळे प्रभु येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवरती तो प्रकट He झाला. is justified in the spirit, उसने आत्मा के द्वारा धर्मी ठहराया तो आत्म्याने नीतिमान ठरविला गेला. seen of angels, और वो स्वर्गदूत को दिखाई दिया, देवदूतांच्या दृष्टीस पडला. preached unto the Gentiles, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, त्याची राष्ट्रात घोषणा झाली. believed on in the world, जगत में उस पर विश्वास किया गया, जगात त्याच्यावर विश्वास ठेवण्यात आले received up into glory. महिमा में ऊपर उठाया गया। आणि गौरवात तो वर घेतला Let's गेला. all close our eyes. आइए हमारे आंखों को बंद करें। या आपण आपले डोळे बंद करूया. Amen. Understand the manifestation of Jesus in this world. क्यों इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आया, उसके प्रकट होने की वाली बातों को आइए हम समझ ले। पहा प्रभु येशू ख्रिस्त या जगात का आला, या हे गोष्टी आपण समजून घेऊया. If you understand why Jesus, the purpose of Jesus appearing in this world, अगर आप इस बात को समझ लोगे कि क्यों प्रभु यीशु इस संसार में प्रकट हुआ, जेव्हा तुम्ही समजून घ्याल की का प्रभु येशू ख्रिस्त या जगामध्ये प्रकट झाला, it will change your life. आपके जीवन को वो प्रकाशन बदल डालेगा आणि तुमच्या जीवनात ते प्रकाश तुमचे जीवन It will बदलून lead you टाकेल. from first salvation to the final salvation. वो आपको पहले उद्धार के अनुभव से अंतिम उद्धार की ओर ले चलेगा। आणि ते तुमच्या पहिल्या तारण्याच्या अनुभवापासून शेवटच्या तारण्याच्या अनुभवामध्ये घेऊन जाईल. Stand on your knees and commit your life into the आइए life to the हमारे word of God. आइए परमेश्वर के वचनों को सुनते हुए घुटने में होते हुए अपने जीवन को समर्पण या करें। आपण देवाचे वचन ऐकत गुडघ्यावर येऊन आपले जीवन आपण समर्पण One life करूया. and one heart. एक आत्मा में एक हृदय, One life and one heart. एक जीवन एक हृदय। आणि एक जीवन एक हृदय Let us give होऊया. it to the Lord Jesus. आइए यीशु को अपना जीवन दे दे। या आपण येशूला आपले जीवन देऊया. Let the word of God transform your life. परमेश्वर का वचन आपके जीवन को रूपांतरित करने दे। परमेश्वराचे वचन तुमचे जीवन रूपांतरित करू The दे. word of God which transformed Saul's life into Paul. जिस परमेश्वर के वचन ने साउल के जीवन को पौल में रूपांतरित किया, आणि ज्या वचनाने शौलाचे जीवन पौलामध्ये परिवर्तित केले, The word of God which transformed Zacchaeus' life. जिस परमेश्वर के वचन ने जक्कई के जीवन को बदल डाला, ज्या वचनाने जक्कयाचे जीवन परिवर्तित केले, The word which transformed David's life. जिस वचन ने दाऊद के जीवन को रूपांतरित किया, ज्या वचनाने दाविदाचे जीवन परिवर्तित केले, The prayer, the humble prayer which transformed the publican's life. वो नम्र चुंगी लेने वाले की प्रार्थना के द्वारा जब चुंगी लेने वाले का जीवन जैसे बदल गया, आणि ज्या प्रकारे जगातदारच्या प्रार्थनेच्या द्वारे त्याचे जीवन परिवर्तित झाले, The word of God which transformed the early church where 3,000 people took baptism. पहले शताब्दी में पहली बार प्रचार करने के समय में 3,000 लोगों ने जो बपतिस्मा लिया, उस कलीसिया को जिस प्रकार परमेश्वर ने बदल डाला, पहिल्या शताब्दीमध्ये प्रचार करीत असता बाप्तिस्मा घेतल्याच्या द्वारे त्यांचे जीवन ज्या प्रकारे परिवर्तित झाले, He is present in our वही परमेश्वर देखो हमारे बीच में उपस्थित है। पहा तोच परमेश्वर आज आपल्यामध्ये उपस्थित Allow him आहे. to transform your life. आपके जीवन को रूपांतरित करने के लिए उसे अनुमति दे। तुमचे जीवन परिवर्तित करण्यासाठी तुम्ही त्यास परवानगी द्या. May God bless us with His परमेश्वर words. इन वचनों से आपको आशीष करे। परमेश्वर तुम्हास या वचनाने आशीर्वादित करो.